Hello everyone, welcome to VDS. In this video, we will see top 500 most important general awareness questions. Of course, banking awareness questions are also covered in this video only, in this series only. We are making a series of top 500 most important GA questions. सारे questions एक series में cover करना मुश्किल है, so that's why we are covering 50 questions in this one video. And total 500 questions cover करने के लिए it will take 10 videos. तो 50 questions per video में cover करके हम 500 questions सारे एक 10 वीडियो सीरीज़ हम ये क्रिएट कर रहे हैं. उसके अंदर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चंस फॉर IBPS SO स्केल 1 लॉ ऑफिसर कवर करेंगे. दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ द सीरीज़. एंड आपको दूसरी जगह से भी जनरल अवेयरनेस पढ़नी है. यू शुड टेक दिस वीडियो सीरीज़ एज अ रिविजन सीरीज एंड नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ लर्निंग. ऑफकोर्स हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर कवर कर रहे हैं, तो देर आर हाई चांसेस कि बहुत सारा इसके अंदर से आए क्वेश्चन एग्जाम में. स्टिल 500 क्वेश्चन आर नॉट इनफ. टेक दीज एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओनली एंड एज अ रिविजन ओनली. ओके, आपने अगर अभी तक यू हैव नॉट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप एंड प्लीज़ डू ज्वाइन इट. अगर हमें कोई भी आपसे इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करना है या कुछ भी डिस्कशन करना है, वी डू इट थ्रू द चैनल एंड ग्रुप ओनली. सो दिस इज़ अ मस्ट. इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट. अभी तक हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर आए हैं एंड आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे. द नेक्स्ट वीडियो टॉपिक विच आई एम गोइंग टू ब्रिंग इज़ पास्ट ईयर 2023 मेंस में जो 60 क्वेश्चंस थे उनकी वीडियो. What were those 60 questions which were asked in past year's mains paper? So that's why you should subscribe this channel as soon as possible. Okay. Another thing which I want to share with you is we have brought a free mock test series for IBPS SO Scale 1 Law Officer for everyone. Completely free है mock test series. आपको बिल्कुल ही इसका फ्रीली एक्सेस है. यू डोंट हैव टू स्पेंड अ पेनी ऑन इट. प्रीलिम्स के भी इसके अंदर हम मॉक्स लेके आए हैं एंड मेंस के भी मॉक्स है इसके अंदर. तो दिस इज़ द वेबसाइट फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस दीज मॉक्स एंड स्प्रेड दीज इंफॉर्मेशन अबाउट दिस मॉक्स ऑल्सो. क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जब आपके ये मॉक्स अटैम्प्ट करेंगे, यही एक्चुअली मेन पर्पज़ था फ्री इन्हें करने का, कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अटैम्प्ट कर सके. तो उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको एग्जाम से पहले कंपटीशन पता चलेगा, आपकी प्रिपरेशन कितनी है वो पता चलेगा. तो इसलिए ये वेबसाइट है. डू अटैम्प्ट दोज फ्री मॉक्स, डू अटैम्प्ट एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. एनालाइज करिए मॉक्स देने के बाद और उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करिए. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता करिए आपकी एंड सबको बताइए इन मॉक्स के बारे में. इट विल बी ग्रेटफुली हेल्प यू. इट विल ग्रेटली हेल्प यू. आई एम डेफिनेटली सेइंग इट. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन. एक और बात, जब भी कोई भी क्वेश्चन है इसके अंदर जो कीवर्ड्स होंगे उसको ऐसे आई विल मेक अ सर्कल अराउंड इट. तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि ये कीवर्ड्स हैं, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है इसमें. तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर लेंडर IndusInd Bank has approved the reappointment of Sumant Katpalia as MD and CEO of the bank for how many years? The correct answer is 3 years. Okay. IndusInd Bank, Sumant Katpalia, MD CEO, 3 years. Next. Where is the 8th edition of India-Kazakhstan Joint Military Exercise Kaz in 2024 being held? Right answer is Oli. Next. In September 2024, the RBI organized a day-long conference for the directors of small finance banks in Bengaluru. What was the theme of this conference? The right answer is governance in small finance banks, driving sustainable growth and stability. ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर थीम पूछता है आपको, ये ड्यूरिंग मॉक्स आपको एक बार इसमें अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता है तो भी आपको अटैम्प्ट करना चाहिए थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर कि पाँचों में से सबसे ज़्यादा आपको एक एडिक्वेट या फिर एडिक्वेट विल बी द रॉन्ग वर्ड हियर, एक सही वर्ड थीम कौन सी लग रही है आपको उस इवेंट के लिए. तो अगर आपको लग रहा है इन मॉक्स के रिजल्ट से दैट यू आर टेकिंग द राइट आंसर, तो एग्जाम में भी आप ये रिस्क ले सकते हैं कि अगर आपको नहीं पता आंसर तो भी आप एक जो सही लगे आपको पढ़ कहीं कि ये थीम हो सकती है उसको आप टिक कर सकें. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन September 2024 विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड टू द 15-member स्टीयरिंग कमेटी. ये एक 15 मेंबर की कमेटी होती है ऑफ द ग्लोब नेटवर्क फॉलोइंग अ मल्टी स्टेज वोटिंग प्रोसेस ड्यूरिंग अ प्लेनरी सेशन इन बीजिंग. द आंसर इज इंडिया. इसका भी एक और आपको मैं ट्रिक बताता हूँ. जब भी आपको ऐसा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना लगे क्वेश्चन कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका आंसर जनरली इंडिया होगा, क्योंकि दैट्स व्हाई दे हैव आस्क्ड अस दिस क्वेश्चन. अगर आपको ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं लग रहा है तो इसका आंसर इंडिया होने के चांसेस बहुत हाई हैं. फॉर एग्जाम मैं आपको ये कुछ कॉमन टिप्स बता रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 5. विच बैंक हैज़ अनवील्ड इट्स कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड सूट डिजाइंड स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स विद द न्यू इकोनॉमिक ग्रुप? राइट आंसर इज एक्सिस बैंक. Who has been appointed as chairman of Utkarsh Small Finance Bank? Chairman of Utkarsh Small Finance Bank. The right answer is Parveen Kumar Gupta. Next question. Which bank
has launched a special scheme, Sugam Rin Bhugtan Yojana, short form is Sugam. Sugam Rin Bhugtan Yojana to boost its recovery efforts through one-time settlement. We also call it OTS, one-time settlement for retail NPAs up to March 31st, 2021. This date is also important. The right answer is IDBI. NPS की फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, तो ये भी आपको याद रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी विलेजेस वर अवॉर्डेड अंडर द सेकेंड बेस्ट टूरिज्म विलेज कॉम्पिटिशन 2024? द राइट आंसर इज 36. Next, the central government has announced an increase in minimum wage rates by revising the variable dearness allowance. The new wage rates will take effect from 1st October 2024. Next question, which country will host the World Telecommunication Standardization Assembly from 14 to 24 October 2024? The right answer is again India. See, that's what I told you just few slides before कि जब भी, अब इसका आंसर शायद दूसरा कंट्री भी हो सकती थी, बट अगर आपको जितना लेस सिग्निफिकेंट इवेंट है और कंट्री के बारे में पूछा तो उतने हाई चांसेस हैं इंडिया होने के. ओके. Which bank has collaborated with easemytrip.com to introduce an easemytrip co-branded travel debit card targeting frequent travelers and those spending on entertainment and lifestyle? Right answer is Bank of Baroda. Next, which bank has launched NPS Vatsalya, a unique program under the NPS designed to provide minors with a secure and flexible retirement planning solution? NPS Vatsalya is for minors. Okay, one thing. The full form of NPS is National Pension System. Okay, so to provide minors with a secure and flexible retirement planning solution, ensuring long-term wealth building through compounding with a minimum annual contribution of ₹1,000, offering diverse investment options across asset classes. The right answer is Federal Bank. Next, in September 2024, the West Bengal government announced the discontinuation, very important question, the discontinuation of the 150-year-old tram service, barring a solitary heritage route in which of the following iconic areas of Kolkata, allowing passengers to experience a pleasant and environment-friendly ride on a short stretch. The right answer is Maidan to Esplanade. That's what I think it is pronounced. So, next question. This is very important question. Okay. 14. Sorry. In September 2024, Moody's revised its calendar year 2024 growth forecast for India to how much percent from its earlier estimate of 6.8% in June, as it expects growth in the Asia Pacific region to outpace the global economy. The right answer is 7.1%. Next question. The CAG, Comptroller and Auditor General of India, assumed chairmanship of the Asia Organization of Super Audit Institutions, Asia Organizations of Super Audit Institutions, for 2024 to 2027, for 3 years. Okay. Next question. Which state government has launched the CM Saath scheme to boost the educational prospects of the state's brightest students? The right answer is Tripura. Next. In September 2024, which tribal community from Odisha became the 6th particularly vulnerable tribal group to receive habitat rights under the Forest Rights Act 2006, a landmark legislation that grants legal recognition to forest dwelling communities? The right answer is Mankedia. Okay. Next, the DRDO, Defense Research and Development Organization, together with researchers of which IITs, has developed lightweight bulletproof jacket named ABHED, Advanced Ballistics for High Energy Defeat. This is also, you should remember the full form of ABHED. Exam में they can ask you that what does B stands for in ABHED, and पूरा आपको ये क्वेश्चन देंगे and पूछेंगे इसकी full form. तो Advanced Ballistics for High Energy Defeat, which offer 360-degree protection. The correct answer is IIT Delhi. In September 2024, which bank partnered with Decentro, India's largest fintech infrastructure platform, to become the first to support the integration of its newly unveiled eNACH and UPI AutoPay mobile modules designed to streamline recurring payments for business? Right answer is Yes Bank. Which bank has joined hands with MasterCard to launch MyBiz, a business credit card designed exclusively for sole proprietors and small business owners? Correct answer, Axis Bank. Next question, question number 21. According to the Asian Power Index Report 2024, recently released by the Australian think tank
Institute, India is ranked the third most powerful country in Asia. This is important. Which is the most powerful country in Asia? USA. I don't know how. This is the USA. Okay. In September 2024, the most important part here is this, that India has been ranked third most powerful country in Asia. Okay. And it is, the report is released by think tank Lowy Institute. In September 2024, which company signed an MOU with the Rubber Research Institute of India to enhance research on using rubber process oils in tire and non-tire rubber products? Answer is Indian Oil Corporation. Tata Steel commissioned India's largest blast furnace with a volume of 5870 square meters as part of its 27,000 crore phase 2 expansion at which of the following places? Answer is Kalinganagar, Odisha. You should remember some facts about company of Tata, just because you know Ratan Tata ji passed away recently. तो Tata company से related there are chances कि कुछ question, एक question आ सकता है. Okay, exam. Which bank has recently launched the Ashwa and Mayura credit card? Answer is IDFC First Bank. Next question. The center has constituted a committee to formulate a framework for the repairability index in the mobile and electronic sector. Who will chair this committee? This is also an important question. Bharat Khera. This is important because government एक right to repair ऐसा कुछ तो एक है जो गवर्नमेंट लाना चाहती है, सो दैट द इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनीज रहती हैं दे कैन, जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स रहते हैं अगर वो ख़राब होते हैं तो यू कैन गेट देम रिपेयर्ड एट चीप कॉस्ट. सो दैट्स वाई दिस इज इंपॉर्टेंट. Who has been appointed as the Chief of National Crime Bureau Records Bureau NCRB? Answer is Alok Ranjan. Next question. Which of the following countries partnered with India to establish its first ever national security semiconductor fabrication plant designed to manufacture infrared, gallium nitride and silicon carbide chips for military hardware and next generation telecommunications? Answer is USA. Question number 28. The Union Home Ministry cancelled the FCRA license, Foreign Constitution Registration Act, FCRA license of the International Cooperative Alliance due to alleged violations of regulations. In which year ICA was formed? Answer is 1895. Which Indian film has been selected as the official entry for the 97th Academy Awards, Oscar 2025? Answer is Lapata Ladies. Oleg Konenko and Nikolai Chubb set a new record for the longest single mission aboard the International Space Station. Konenko and Chubb broke the previous record for the longest continuous staying space, which was set by cosmonauts Sergei Prokopyev, Dmitry Petlin, and NASA astronaut Francisco Rubio. Oleg and Nikolai belong to which country? Answer is Russia. Generally, Russia and USA have that competition in space. Indian wrestler Sangram Singh became the first Indian male wrestler to win an MMA mixed martial arts fight at the Gamma International Fighting Championship. First Indian male wrestler. Okay, Sangram Singh. The championship was held in which country? Georgia. The Ayushman Bharat PMJAY scheme launched by the Prime Minister Narendra Modi on September 23, 2018 celebrated its 6th anniversary. The scheme provides health coverage of how much rupees per family annually for secondary and tertiary care to over 55 crore individuals. This number is also important. The answer is 5 lakhs. Which state government has launched a financial assistance program, Bana Ke Hai, which aims to provide financial assistance to farmers growing ginger, turmeric, miso chilli and broomsticks? Answer is Mizoram. See, this was hint in the question itself. In September 2024, who among the following was appointed as the MD and CEO of Federal Bank, taking over from Shyam Srinivasan? The answer is KVS Manian. India has signed the first of its kind agreements focused on a clean economy, fair economy, and the overarching Indo-Pacific economic framework in Delaware, USA. In which year IPEF was launched? Answer is 2022.
This is important. India has won the Chess Olympiad 2024 by defeating which country in the women's category? Azerbaijan. See, males category will be obvious. Many candidates will learn. That's why women's category is important, because they might ask you this question to make it a little bit more difficult. But you should also remember the country which was defeated in male category. Okay. The Asian Development Bank has approved rupees 530 crore to boost drinking water supply in 12 cities of which state? Answer is Tripura. Next. In September 2024, Dash and Dash were felicitated with the Best Male and Female Player Awards, respectively, at the FIDE 100 Awards ceremony in Hungary. Who were those two people? Magnus Carlsen and Judith Polgar. Okay, Magnus Carlsen is from Norway. And one more thing you should remember is नवंबर में वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप हो रही है एंड डी गुकेश is competing in that against Ding Liren from China. Ding Liren from China. D. Gukesh is from Tamil Nadu and he's Indian. So if he wins that World Chess Championship, okay, so he will become the World Chess Champion. तो ये एक इंडिविजुअल टूर्नामेंट होता है. बेसिकली डिंग लिरेन इज करंट वर्ल्ड चेस चैंपियन एंड डी गुकेश इज गोइंग टू चैलेंज हिम फॉर दैट टाइटल. तो ये आपको याद रखना है, नवंबर में हो रहा है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. एंड जो विश्वनाथन आनंद है, ही वॉज एक्चुअली द टॉर्च बियरर फॉर द क्रेज ऑफ चेस इन इंडिया. तो ही वॉज 5 times वर्ल्ड चेस चैंपियन. ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, 5 times वर्ल्ड चेस चैंपियन एंड ही इज ऑल्सो फ्रॉम तमिलनाडु आई थिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन. In September 2024, who among the following was elected as the president of the 68th General Conference of the International Atomic Energy Agency? Answer is Sang Wook Ham. Who has been appointed as the new Chief of Indian Air Force? Amarpreet Singh. Who has been elected as the new president of the National Rifle Association of India? Kalikesh Narayan Singh Dev. The Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences has signed an MOU with which company to develop critical technologies for tracking space objects, particularly near-Earth objects and artificial satellites, as part of India's growing focus on space situational awareness? Answer is BEL, Bharat Electronics Limited. India extends budgetary support to which country in the form of a rollover of $50 million treasury bill for another year? आंसर इज मालदीव्स. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मालदीव्स के साथ रिलेशंस खराब हो गए थे अपनी कंट्री के. उसके बाद वी अगेन इन अ डिप्लोमेटिक मूव ग्रांटेड देम दिस हेल्प बेसिकली. विच बैंक हैज लॉन्च्ड द पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद पैसा बाजार? आंसर इज यस बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ द नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? आंसर इज अनुराग गर्ग. Who has been appointed as the whole-time director, executive director of Tamil Nadu Mercantile Bank for a period of 3 years? Vincent Manachari Devasi. The Reserve Bank of India has approved the reappointment of V. Vaidyanathan as MD and CEO of IDFC First Bank for how many years? 3 years. Which SFB, Small Finance Bank, has launched a comprehensive solution, Liquid Plus, fixed deposit with attractive interest rate of 6.75% annum for tenures ranging from 7 to 180 days? Answer is Jan Small Finance Bank. Where was the first anniversary celebration of the Central Sector Scheme PM Vishwakarma held? Correct answer, Wardha, Maharashtra. Okay. Recently, which country has become the first country to eliminate leprosy, getting official verification from the World Health Organization? First country to eliminate leprosy. This is Jordan. Okay. तो 50 क्वेश्चंस का टारगेट था पार्ट 1 में. 50 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए है. ये 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फॉर जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ है. 10 पार्ट्स में वी विल कवर इट. तो यू शुड वॉच ऑल दोज 10 पार्ट्स. स्पीड थोड़ी इंक्रीज करके देखिए, 1.25 या 1.5 जो भी आपको कंफर्टेबल रहे उस स्पीड में यू शुड वॉच द वीडियोज़. ओके, एंड पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा. सारी वीडियोज़ को यू शुड एटलीस्ट वॉच इट 2 to 3 times ताकि आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए एंड यू कैन एक्चुअली टेक द करेक्ट आंसर इन द एग्जाम. ओके. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक्स है वेबसाइट्स पर, प्लीज़ डू अटेम्प्ट देम एंड चेक योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड देखिए आप कंपटीशन में हाउ आर यू स्कोरिंग एंड परफॉर्मिंग अगेंस्ट देम. ओके, सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप. थैंक यू फॉर watching this video. See you in the next videos.